Hi everyone, let me just turn off my background and remove the background effect because I think that is distracting. So this is much better, isn't it? The background effect is distorting the space. So I think this is much better. Everyone agrees to that? Okay, very good evening, all of you. Fantastic to see you all here. Great to see you, Preeti, after some time. Hari Kishan, as always. So, बहुत ही warm welcome all of you. This is a very interesting short discussion that I'm going to have along with you on time cycle. Along with that, Ichimoku cloud, and it has been a fantastic day. In fact, the way markets behave, the way markets move, and it has been simply superb. I was also live on ET now. Just some time back, ET markets. I was live on ET markets also, ET now also. So a lot of interviews going on. But ये 4 बजे का webinar, I thought Tuesday at 4 I will do it for very quickly to explain you why time is so important and how you can look at the time and how you can trade. So before I move on, I will very quickly share across my Twitter handle very quickly just to showcase कि टाइम को कैसे देखा जा सकता है, कैसे आप टाइम को देख के ट्रेड कर सकते हो, or is it possible to really look at time and trade the market? So I'm going to very quickly share across a chart which was discussed and talked about on the Saturday webinar. Before I move on, I want to ask you, were you there with me on 8th of October, Saturday morning 11 a.m. जब हमने मार्केट के बारे में ओवरऑल टाइम के बेसिस पे ट्रेड डिराइव किया था? क्या आप थे उस टाइम पे? इफ यू वर देयर देन टेल मी विद अ बिग यस सो दैट आई नो. People who are there on YouTube, if you want to, you can join me here along with along with many participants on the Zoom itself. I'm creating that link and sharing it across quickly on the YouTube channel. Okay, यहाँ पर है. क्या आप थे मेरे साथ में वो टाइम पे जहां पर हमने बात की थी कि मार्केट में कैसे और क्या बात होने वाले कमिंग वीक के लिए बेसिस ऑफ टाइम? ना वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं कि क्या बात हुई थी, कैसे मार्केट के पैटर्न को हम देखने वाले थे और क्या मार्केट में वैसा हुआ प्रिसाइजली या क्या नहीं हुआ. तो चलते हैं. लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन राइट नाउ. एंड ये रहा वो फोटोग्राफ जो मैंने लिया था जब हम ये सेशन कर रहे थे. क्या are you able to see this chart? Are you able to see this chart which we did derive together when Nifty was at the level of 17,316? हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि कैसे मार्केट का मूवमेंट आएगा? एंड कैन यू सी, यहां से एक्सपेक्ट था कि निफ्टी विल कम डाउन, देयर विल बी अ बाउंस बैक ऑन द अपसाइड. आफ्टर द बाउंस बैक निफ्टी शुड कंटिन्यू टू फॉल. Another bounce can come at around 11th October 11:30 a.m. फॉल के बाद में बाउंस बैक आया, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आया. चलेगा ना? 10:45 को आ गया, 10:30 10:45 को आया बाउंस बैक. काम वही था. एंड फिर यहां से वापस सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जैसे ही ये लो ब्रेक होगा. क्या ये चार्ट आपने नोट किया था? हमने ये साथ में डिराइव किया था. देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स on 8th of October morning Saturday 11 a.m. के वेबिनार में. ये चीज हमने खुद से साथ में सबने मिल के डिराइव की थी टाइम साइकिल के बेसिस पे. अभी इसके बाद हुआ क्या देखते हैं. तो काफी सारे जन, अगर आप ट्विटर मुझे फॉलो कर रहे हैं, काफी सारे जन बोलते हैं कि आप यूएस मार्केट को देख के यू आर ट्वीटिंग अक्रॉस क्या होने वाला है. सैटरडे मॉर्निंग को कौन सा यूएस मार्केट चालू था या बंद था, या कहां पता था कि वेडनेसडे तक ट्यूसडे तक क्या होगा? ये तो हमने सैटरडे डिराइव किया था, राइट? So there are people who just try to find out, bad in every good. In fact, I just commented also yesterday, I am the guy who will find out good in every bad, because these people makes us strong, makes us alert, and makes us responsible for what we are doing. अगर सोचो ना, देश में खाली एक ही गवर्नमेंट रूल कर रही होती तो क्या वो गवर्नमेंट एनआरकी नहीं हो जाती? It's good that we have oppositions so that we improve, we grow. That's what I look at it. So this is what the chart suggested clearly. Now let's go to the latest chart कि क्या हुआ. Wow, this is exactly what happened. Nifty came down, showed a pullback on the upside, came down again. This is the time that we derived together.
यहाँ पर लो बना आज के दिन में, वहां से पुल बैक मिला हमें अराउंड 100 पॉइंट्स का, और ये लो ब्रेक होने पे सेल करना था. दैट वाज द चार्ट विच आई शोड कि ये लो ब्रेक होने पे सेल करेंगे मार्केट को वापस से. एंड अगेन आई विल गो टू दैट chart and I'll share across. Look at this. This is the low form. This is the pullback that happened, and this is where the sell was. Price is different क्योंकि ये टाइम फोकस करे, प्राइस पे नहीं. तो दिस प्राइस जो 17,000 पे होना था वो 17,100 पे हो, बस उतना फर्क है. सो प्राइस थोड़ा सा अलग है, टाइम के हिसाब से प्रिसाइज और ट्रेंड भी परफेक्ट है. आर यू एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस? समझ में आया? और पूर्णिमा के बारे में बात की थी हमने, लूनार साइकिल के बारे में बात की थी कि संडे को लूनार साइकिल है और ट्रेंड शुरू होना चाहिए. ये भी कहा था कि मंडे से शायद नीचे का ट्रेंड चालू होगा क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट्स वीक थे, और पुल बैक भी आएगा, वो भी मेंशन था. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसा मैंने बोला था ऐसा हो गया, नहीं. आई एम ट्राइंग टू टेल यू अ सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ. इट वर्क्स. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये चलता है भाई, आपको ये देख के सीखना चाहिए. That is what I am saying to you. That is why I am showing this to you. नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ट्रेड ले रहा हूँ इस चार्ट्स के बेसिस पे और देख रहा हूँ कि कैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एंड हाउ आई एम लुकिंग एट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर अभी मैं आपके साथ में और भी कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि कैसे ये रियल टाइम में आप देख सकते हो ओवरऑल मार्केट के मूवमेंट को, कैसे आपको देखना है और कैसे आपको समझना है इस मूवमेंट को. चलिए मैं शेयर करता हूं बहुत ही क्विकली. यहाँ पर चलते हैं. ये मेरा ट्विटर हैंडल है, अगर आप देख पा रहे हैं. यहाँ पर यू कैन सी दैट दिस वाज ऑन 10th of October मॉर्निंग बिफोर द मार्केट्स ओपन कि सपोर्ट इज 17,080. निफ्टी का लो बना 17,066 पे. पुल बैक टुवर्ड 17,227 आएगा. पुल बैक आया ऊपर में एंड 340 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. निफ्टी ने 340 नहीं निकाला, वहीं से वापस से रिवर्स हुआ. इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, इट लुक्स market is moving in the perfect rhythm as per time. It is just systematic and people are trading basis of these tweets that I am talking about. It is simply moving fantastic. ये कल वापस से चार्ट शेयर किया था कि ओवरऑल ट्रेंड शायद साइडवेज हो सकता है, बाइंग इमर्ज हो रही है, लेकिन एक भी क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं हो पाया. टाइम विल बी सपोर्टिव अराउंड 11:15, 11:30, 10:45 के आसपास. Again 17,227 acting like magic pulling the prices. That's the range. और जैसे ही ये 120 के आसपास है, पुल बैक आया टाइम के हिसाब से उतने ही बजे और लो जैसे ब्रेक हुआ. I mentioned here again that now the low of 120 in the morning tweet but little over, और यहाँ पर जैसे ही लो ब्रेक हुआ, break below day's low will turn time on the sell side. So what I'm saying is this is how you look at the time. So the entire crux of showing you this is कि इस तरीके से आप टाइम को देख के मार्केट पे से ट्रेड ले सकते हो. सिंपल है, बहुत इजी है एंड यू कैन सिंपली मेक यूज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट. इफ आई गो ऑन द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, ठीक है, मैं कभी तक बेरिश रहूंगा. व्हेन विल आई टर्न बैक बुलिश? आई विल टर्न बैक बुलिश बाय 4th of November के आसपास, जब वो लो बनेगा उसके आसपास देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो वैसा नहीं है. इफ यू लुक एट दिस एंटायर चार्ट दैट आई एम शोइंग इट टू यू राइट नाउ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक भी बार क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं किया. नाउ आई विल आल्सो शेयर अक्रॉस वेरी क्विकली माय इंडिकेटर ऑफ इचिमोको क्लाउड. व्हाई इचिमोको क्लाउड इज सच अ पावरफुल इंडिकेटर? क्यों हम इचिमोको क्लाउड पे इतना फोकस करें, क्यों ये इंडिकेटर इतना इंपॉर्टेंट है? I'll tell you. See, basis of time. Listen me very carefully. What is time and why time should be studied? Time को जो हम समय कहते हैं, उसे हम काल भी कहते हैं. तो काल हो गया, काल का मतलब हो गया समय और स्पेस, दोनों को मिक्स किया तो काल बनता है. और काल is a very strong word, which means the only fact of life is time. If you look at it in a way, रेस्ट ऑल इज ऑल माया. टाइम ही सही है और 100% नथिंग कैन डिविएट टाइम फ्रॉम एनीथिंग. जो हो रहा है वो होना ही है. दैट्स हाउ इट द टाइम इज टिकिंग अवे. सो यू डू एनीथिंग यू वांट टू डू in life, but ultimately the time will expire. That's how for you it will expire, for others it will continue. So the point I'm trying to make is it is time now.
to start focusing on this element of truth even in stock market, and it works. That is what I am trying to tell you people, it works. Now why Ichimoku cloud along with time? Ichimoku cloud is a very superb, again a very simple indicator जिसको यूज करके आप समझ सकते हो कि कहां पर मार्केट टर्न हो रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर से रिवर्स हो सकता है। लेकिन उसका जो बनाने का तरीका है, इट इज आउट ऑफ टाइम। विश्वास नहीं होता, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। उसके अंदर एक लाइन है क्लाउड की जो हम बनाते हैं बेसिस ऑफ सम मेथड, एंड वी शिफ्ट इट टू द राइट बाय 26 पीरियड, 26 डेज। हम दूसरी लाइन बनाते हैं 52 पीरियड का हाई, 52 पीरियड का लो, उसका मिड लाइन बनाते हैं, उसको शिफ्ट करते वापस 26 पीरियड से। हम लैगिंग लाइन बनाते हैं, उसे शिफ्ट करते बैक साइड में 26 पीरियड से। यू नो, नाउ दिस shifting of indicator 26 period in the future is shifting time, 26 period in the past is also shifting time. What this Ichimoku cloud is actually a time trading technique. Very few people know it. The reason I'm able to talk about it with so much conviction, because to be honest, I have not read a book on Ichimoku cloud. There was one book which I tried to just quickly go through it, understand if I'm missing out something. And I was, I was really amazed to see there was a concept which mentioned in that book about time also, that Ichimoku is a time indicator. So that just increased my conviction that this is how it has to be looked at, and I am looking at it in the right way. So Ichimoku cloud, why it works like magic along with time cycle? टाइम से पता चलेगा कि कभी बाउंस बैक आएगा। जैसे मैंने अभी आपको ट्वीट दिखाया, मैंने जो सैटरडे को बोला, दैट वाज जस्ट टू शो दैट आई मेंशन ट्यूसडे देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ बाउंस बैक, बट आई एम नॉट बाइंग दैट बाउंस बैक बिकॉज आई नो द बिगर टाइम इज डाउन। फॉर एग्जांपल, if I know my 55 days time cycle is on the downside, ठीक है, until 4th of November, I'm telling you with the date, 4th of November तक 55 days cycle नीचे है। Along with that, if I tell you these shorter cycles which I am talking about will only going to give a pullback, which means ज्यादा पैसा बनेगा कब? जब वो pullback आया और साइकिल का लो ब्रेक होगा। That's how we get the most amount of money. Why cycles are used to capture the lows only? Cycles are plotted or time is plotted to capture low from one point to the next point to the third point. That's how we capture the low. अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं, आपने देखा नहीं है कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है? You plot a point, from there you connect another point, and then you forecast it for the third point. सेम वे साइकिल को भी उसी तरीके से प्लॉट किया जाता है, लेकिन टाइम स्केल पे, प्राइस स्केल पे नहीं करते। और टाइम के बेसिस पे जब आपकी एक साइकिल डिफाइन हो जाती है तो आपको पता है कहां पर रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी है। उसके साथ प्राइस एक्शन कंबाइन करते हैं, कैंडलस्टिक क्लब करते हैं। तो जहां हमें पता है कि 55 डेज, सो फॉर एग्जांपल, सपोज अगर बड़ा वेव नीचे का है, या सपोज आप सी शोर पे खड़े हो, द बिगर टाइड इज कमिंग टुवर्ड्स द शोर एंड द स्मॉलर टाइड्स आर ट्राइंग टू गो अवे फ्रॉम द शोर। सो होगा क्या? ये क्लैश के अंदर बिगर टाइड विल स्टिल ड्रैग दो स्मॉलर टाइड्स टुवर्ड्स द शोर। सेम थिंग हियर, व्हेन द बिगर टाइम हैज टर्न्ड ऑन द डाउन साइड, जब बड़ा समय नीचे का है, ये जो छोटे समय पे मूव्स आ रहे हैं, इसे पुल बैक कहा जाए। और बड़े टाइड के साथ में एंट्री आपको करनी है, तो ये पुल बैक जो छोटा टाइम साइकिल है आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू राइड दैट बिगर वेव, एंड दैट्स व्हाट टाइम ट्रेडिंग मीन्स। So these people who are trading time, I call them as #time traders. We are in process of creating these time traders. There is a science to it that you have to see it, understand it, and then apply it. You need to know the complete way in it which it functions. अगर समझो आपके हाथ में किसी ने ब्रह्मास्त्र दिया होता और आपको आधा अधूरा नॉलेज है उसको यूज करने का, न्यूक्लियर बॉम्ब समझ लो, ब्रह्मास्त्र ही तो है वो भी, तो आधा अधूरा नॉलेज है यूज करने के लिए, तो क्या नुकसान आपको खुद को नहीं होगा? तो इसीलिए जो टाइम का कॉन्सेप्ट है उसे बहुत अच्छे से बारीकी से समझना चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है? एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, बट यू नीड टू अप्लाई इट करेक्टली।
If you apply it wrongly, you can lose money. If you apply it correctly, you can make a lot of money. So that's why you have to club time along with price. दो चीज पे फोकस करता हूं मैं, प्राइस और टाइम. Rest all of the, I'm seeing so many people, traders, they are focusing on MACD, they are focusing on RSI. I'm not saying those are fantastic tools. I'm saying you focus on that, but your primary focus as a buyer and seller is price and time. If you're not focusing on price and time, you are simply trying to play around with the derivatives of price. Derivatives of price and time क्या हो गया? ये जो indicator derive हुआ है. Can Ichimoku cloud be said as a derivative of price? Yes. But it is also a derivative of time, क्योंकि हम time के साथ play कर रहे, shift कर रहे. So that's why that indicator is very powerful. It's a leading indicator, I would say. And so time also is derived by various people. Hurst time cycle is one aspect of time cycles that you might have used. Then there is a time cycle concept which is defined by even John Murphy has written in his book about the way he sees the time cycle. Martin Pring has done exceptional work. So there are various ways in which this time cycle can be used. And I have used my time cycle the way it works along with wave theory. So I combine time with wave theory. I combine time with Ichimoku cloud. But can we trade using purely time in Ichimoku cloud? Absolutely yes. Then why club and make it complex? Up to you. I have never claimed that you should use Neo wave, you should use Elliott wave, also you should use Hurst time cycles, or you should use GAN, or you should use whatever you want to use. I'm just saying these tools exist. अभी आपको उस ये जो मेथड्स है, ये जो एग्जिस्ट होते हैं, इसमें से आपको कौन सा वाला यूज करना है वो आपके ऊपर है. Okay, so this is how wonderfully it works. So I thought I'll just come live, talk to you people about this concept of Ichimoku cloud, about time, and until when we are expecting. So what we expect now from going here, simple price action. जब तक previous candle के high के ऊपर market बंद नहीं करता है, don't try to catch a low here. Simply use pullbacks, which happens on this periodical time cycle, and sell, keep selling. तो ये जो pullbacks आता है, ये opportunity देता है enter करने के लिए बड़े trend के direction में. You can combine that with Ichimoku cloud also. Let me just show it to you very quickly. Ichimoku cloud on a 15 minutes time frame chart and how it can be combined to look at that. So let me just share that across with you all. यहाँ पर. So if you are looking at this, clearly you can see prices went down. This is a 15-minute cloud. Ichimoku went on resistance towards the cloud, resistance towards the cloud, resistance towards the cloud. Look at it. And this was the time. As soon as this was broken, I clearly mentioned it across. This is the time when you should start looking for selling opportunity. Sell. So सुबह तक लग रहा था रेंज बाउंड मार्केट होगा, 120 का सपोर्ट था, वहीं पे लो बना, 1130 के आसपास पुल बैक आएगा, 1130 के लिए 1045, 1115 के आसपास था, 1045 को आया पुल बैक, थोड़ा सा जल्दी आया और वहीं से, लेकिन पुल बैक आना था वो पता था फर्स्ट हाफ में, तो फर्स्ट हाफ में सेल नहीं था. पुल बैक आने के बाद में एक्सपेक्टेशन था कि अगर अभी लो ब्रेक हो गया तो टाइम विल टर्न ऑन द सेल साइड until when, until the next cycle which is going to be on 12th of October 3:15. तो कल शाम तक के लिए, which is today's 11, कल शाम तक के लिए time is on the sell side. But I am following this not in isolation. I am also applying a bigger cycle along with that. So for next 3-4 days, I think market will not break above 17,300, 17,265. तो अगर 3 दिन तक वो लेवल नहीं ब्रेक होगा, कैन आई नॉट सेल ऑप्शन? आई एम आस्किंग यू, कैन आई नॉट सेल ऑप्शन? एंड कैन यू सी द मैजिक ऑफ 17,227? ये लेवल देख रहे हो आप, 17,227 के आसपास पूरा मार्केट मूव हो रहा है कब से. फाइनली इट इज ट्राइंग टू मूव अवे एंड स्टार्ट अ ट्रेंड. तो यू नीड टू क्लब दीज थिंग्स अक्रॉस. क्या 3 टेक्निक मैंने बताई? फर्स्ट टाइम साइकिल, जिसके बेसिस पे ये टाइम पीरियड मिला. गैन स्क्वायर ऑफ 9, जिसके बेसिस पे गैन लेवल मिले जहां से मार्केट मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है. और तीसरा टेक्निक जो है इचिमोकू क्लाउड, जो टाइम के बेसिस पे डिराइव किया, एंड यू कैन सी द पावर of that Ichimoku cloud right in this chart also. So don't you want to club these things together as a powerful technique of trading and trade the market? क्या आप ये सीखना चाहते हैं इस पावरफुल टेक्निक को और खुद से ट्रेड डिराइव करना चाहते हैं? लुकिंग एट दिस सिंपल एस्पेक्ट ऑफ टाइम ट्रेडिंग टेक्निक्स.
If you want to do that, then you can tell me a big yes. I'm going to be talking about it in 12 hours of session, 10 to 12 hours of session on this weekend in Master of Cycles program. 15-16 अक्टूबर को लाइव है, ऑनलाइन है, एंड क्योंकि आप मेरे साथ में हो आज यहाँ पर, we have few seats left. I am ready to give away those seats, additional few seats which we have across to all of you who wants to become these time traders. The pricing for this right now, we have already ended the early bird offers and everything, but still if you want to register for participants only who are here right now, we can still keep few seats for 22 plus taxes. The link will be shared across by my colleague, and this will be talking about purely about time. It's not about wave theory, it is Master of Cycles talking about time, how to look at time and how to go about it. So I'm taking a very quick poll right now with you all just to see who all are interested in this program of Master of Cycles. You can participate in this poll simply, or you can go on the link and register for this program. I'm telling you, this is only a few seats now left in that pricing which we are offering only for people who are attending this program right now with me. Later on, you might not have the opportunity to be a part of this wonderful technique for I don't know how many months later, maybe 3, 4, 5 months later. Okay, that is when we might want to do that. So any questions on this subject? This is fantastic. This is amazing. It works. You should do that. That's the link I have shared across. You can simply go on the link and register yourself from here. Clearly, any questions that you have, guys, about related to time, and you can simply follow me on Twitter, of course, on YouTube, of course, you can do that. And this is simply amazing. For the participants, anything favorable for existing participants? Yes, of course. We are also going to have we are going to share across the pre-session videos with you all. Whoever is registering the pre-session video where I have explained कि इस cycle को कैसे plot करते हैं and how you should prepare yourself for Saturday. The reason I'm sharing the video across because that is already being done, and that's the video before the live session happens on Saturday. Those will be shared across with you all. Okay. Sri Hari R is saying, sir, today your advice I earned 22,000 profit. Fantastic. That was purely on time. तो क्यों नहीं सीखे exactly 22,000 आपने बनाया जो हमारा ट्रेनिंग का कोर्स का चार्जेस है. You can be a part of that. Sachin is saying अधिकतर समय इंग्लिश में बोलते. See, this training will be in English, Hindi, both mixed. So that's how it's going to be. Purely हिंदी में नहीं है हमारा. If you are looking for that. Okay. No, तो प्री वीडियो अभी हमने दिया नहीं है किसी को. The pre videos will be given to you across tomorrow for the participants. प्री सेशन वीडियो जो हम एमओसी का प्री सेशन वीडियो बोलते हैं वो सबको देंगे. कल तक आपको एक्सेस मिल जाएगा. You will get the access from there directly. So you will have it on the platform over there. What about GAN time cycle? Yes, of course, Shrikant. So GAN भी यहाँ पर सीखेंगे हम. GAN के बारे में बात करेंगे. We will also look at GAN square of 9. And we'll be looking at clearly how to use that GAN square of 9, 17,227 का levels. और उसके साथ में हम कंबाइन करेंगे टाइम को और उसके साथ में कंबाइन करेंगे इचिमोको क्लाउड. सो ये सब टेक्निक्स को साथ में कंबाइन करके 5 ट्रेड सेटअप्स हम डिराइव करेंगे बहुत क्लियरली ओवर द वीकेंड. Clearly, okay, fantastic, guys. Any other questions? I'll be more than happy to get you all. So I can see so many of you are already here, already registered for the program. If I may ask, how many of you have already registered for the program? Can you please start raising your hands or put it on the chat so that I know. Suresh has already been a part of this. Srihari is there. Srihari is there, right? Sanjay Singh, yes, I know you are there. Prabhakar, you are a part of this program, right? I know Devashish Roy is there. MS is there. Wow, fantastic. So many. Ram is there. So many of you are already a part of this program. I just want to remember your names so that I know. I love knowing about it. Those things I know. What does the lagging line of Ichimoku signify? The lagging line, if it is hitting a resistance or it is not hitting a resistance, that's what it signifies. So lagging line is very important.
It helps us to understand अगर market resistance को hit कर रहा है कि नहीं कर रहा है. That is what it clearly represents. Is it clear? Srini has registered for it. Shri Hari, okay, you're waiting for Diwali, but Diwali ke baad I don't think we have this program. This program ends before Diwali. Great, guys. That's what I wanted to share across, talk about, and fantastic. Pulla policing memory is awesome. That's why I'm remembering the name of all the people who are a part of this program. I don't want to forget them for sure. मास्टर ऑफ साइकिल में कैंडल के ऊपर एंड टाइम साइकिल के ऊपर क्या सिखाएंगे? तो टाइम साइकिल पे हम देखेंगे कैसे वो पीरियड डिराइव करना है, कैसे स्टॉक्स पे अप्लाई करना है, कैसे इंट्राडे ट्रेड करना है, कैसे ऑप्शंस को देखना है. टाइम साइकिल के बेसिस पे आप ऑप्शन पे भी अप्लाई कर सकते हो. और साथ में हम देखेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन के साथ टाइम साइकिल के साथ काम करना है. तो हर टाइम साइकिल वी आर गोइंग टू लुक एट इवन forex, we are going to look at even commodities, we can look at all of those things. You mentioned about pullback will happen around 11:15 a.m. today, was expecting. Yes, pullback आया ना, थोड़ा सा जल्दी आया. That's what we went. Can we automate the strategy? देखते हैं, कोशिश करते क्या क्या ऑटोमेट हो सकता है. बल्कि टाइम के बेसिस पे आप प्राइस को भी फोरकास्ट कर सकते हो. कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं? एक कॉन्सेप्ट है एफएलडी का, उसके बेसिस पे हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है. ओके, रामवेल इज सेइंग मेड मनी टुडे विथ योर बेसिक टुडे वीडियो. सो रामवेल, आई थिंक आपने बोनस वीडियोस देखा होगा, जो बेसिक वीडियोस की बात कर रहे हैं, वो वीडियोस को देख के भी पैसा बन रहा है. वाओ, दैट इज ग्रेट. क्लास के बाद डाउट क्लियर सेशन. यस, सो वी विल हैव अ डाउट क्लियरिंग सेशन about 10 days later, 10 days to 12 days later. For Master of Waves participant, we have a doubt clear session tomorrow. We are going to have it at 4 for people who missed out. And for the mentees also, we have a special Neo Wave session, which is scheduled for tomorrow at 4. All the mentees, we will be discussing in detail about the wave pattern and Neo Wave in detail tomorrow. So there will be a Q&A session on wave theory. All mentees are invited. Like I invite, mentees are always a part of the most exclusive sessions we conduct. So all the mentees will be invited tomorrow at 4. We will have a clear discussion on Neo Wave discussion. So Q&A के साथ में. Narayan also made strategy. Okay, basic to advanced. These things are all everyone can attend. Great, guys. So I am ending the poll very quickly, and fantastic to see you all for this Saturday. Thank you very much for joining in. It's a wonderful journey becoming a time trader. जहां पर भी आप हो, इस टेक्निक को भूलिए मत. ये टेक्निक बहुत यूनिक है और ये काम करती है. जो मैंने ट्वीट आपके साथ शेयर किया, that was only to showcase it works as a trailer. और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है. 100% सर्टेनिटी तो मैं नहीं बोलता और मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया. तो कभी स्टॉप लॉस भी हो सकता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. बट कैसे अप्लाई करना है इस साइंस को, और जब प्रॉफिट बनता है तो ज्यादा बनाना है, वो अप्लाई करना है, वो सब चीजें हम करेंगे. आई हैव रजिस्टर्ड फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम. विल आई बी इनवाइटेड फॉर मीटिंग? ऑफ कोर्स कुमार. जो भी मेंटी है, एग्जिस्टिंग नवंबर वाले या पास्ट, दे आर पार्ट ऑफ माय एक्सक्लूसिव इनवाइट्स व्हिच हैपन. सो you always are a part of it. Fantastic, guys. Thank you very much. Have a wonderful time. See you on Saturday at 10 a.m. and be ready, be prepared, be fresh with an open mind. I'm going to rock you. You will be amazed to see how we combine these techniques. We'll also look at lunar cycle along with that in much detail. और सिग्नल कैसे लेना है, ट्रेड कहाँ डालना है, कैसे सेटअप मिलेगा, वो सब चीजें हम कंबाइन करेंगे. थैंक यू. हैव अ वंडरफुल